We had seen equation for amplitude modulated wave. Okay, and the equation is Vc into 1 plus m sin omega mt into sin omega ct. Okay, now as you know that sin x into sin y, ये फॉर्मूला पता है ना आपको? What is sin x into sin y? It is cos x minus y minus cos x plus y upon 2. तो यहाँ पे मैंने 1/2 बाहर निकाला, ठीक है. तो therefore if we apply this formula to this, then we'll get, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? Vc sin ओमेगा ct प्लस mvc sin ओमेगा mt इंटू sin ओमेगा ct. ठीक है ना, ये हो जाएगा. हाँ, ओके. एंड यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. You can solve this equation using this formula, right? So first term is Vc sin omega ct plus mvc sin omega mt into sin omega ct. This we can solve by using this formula. So it becomes mvc by 2 cos omega c minus omega m into t minus mvc by 2 cos omega c plus omega m into t. Okay, so therefore here we got three terms. The first term is Vc sin omega ct. Now here you can observe that the first term contains only the carrier signal, right? It's a unmodulated carrier. We can call it as a unmodulated carrier. Vc is the amplitude and omega c is the frequency of carrier signal. Therefore, first term is your unmodulated carrier. Okay. Now mvc by 2, it is constant. Okay, into cos omega c minus omega m into t. Now it is omega c minus omega m means carrier signal or carrier frequency minus modulating frequency. Okay, this we can call as a lower sideband. हम इसको बोलेंगे lower sideband. ठीक है. And the third term is mvc by 2 is constant into cos omega c plus omega m into t. Now this term omega c plus omega m है, यानी this is your upper sideband. This is your upper sideband. ठीक है. तो हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन में हमें कितने टर्म्स मिले हैं? In this equation we got three terms. And which are those terms? First term is unmodulated carrier and second term is lower sideband and the remaining third term is upper sideband. Okay, from these equation we can plot spectrum of amplitude modulated signal. How could we plot a spectrum of amplitude modulated signal? Now this is the frequency spectrum of AM wave. ठीक है, तो middle is the carrier frequency, that is fc और ओमेगा सी. ओके, और अपर साइड बैंड आपका यहाँ रहेगा. क्यों इस साइड रहेगा राइट हैंड साइड? क्योंकि राइट हैंड साइड में fc प्लस fm करेंगे तो दिस इज योर अपर साइड बैंड. fc प्लस fm इज योर अपर साइड बैंड. एंड इफ वी सब्सट्रैक्ट fm from fc, then at left hand side you will get a lower side band. Okay, now come to the amplitude of carrier signal and side bands. ठीक है, तो what is the amplitude of carrier signal from this equation? From this equation you come to know that Vc is the amplitude of unmodulated carrier. Therefore the amplitude of this unmodulated carrier is Vc. Okay, and here for lower sideband and upper sideband the amplitude is mvc by 2. What is the amplitude? mvc by 2. If we consider modulation index, m is modulation index and it is half of vc by 2. Okay, now if we consider modulation index equals to 1, then it is directly half of vc by 2. ठीक है, तो ये जो vc एम्पलीट्यूड है कैरियर सिग्नल का, इसका हाफ एम्पलीट्यूड रहेगा अपर साइड बैंड का और हाफ रहेगा लोअर साइड बैंड का. राइट, it is mvc by 2 and if we consider m equals to 1, then it becomes vc by 2, means half of this amplitude. Okay girls,
आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट? समझ में आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. Okay. Now bandwidth requirement, BAM. Bandwidth requirement is higher upper frequency minus lower frequency. What is the formula of bandwidth? Upper frequency minus lower frequency और higher frequency minus lower frequency. Okay, तो हमारी upper frequency क्या है? Omega C plus omega M. Okay, now here don't get confused. Here we can take omega term or F term. ओके, डोंट कंफ्यूज हियर. हम ओमेगा भी ले सकते हैं, एफ के टर्म्स में भी ले सकते हैं. नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू. अब अगर आपने यहाँ पे ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, तो एफ सी प्लस एफ एम माइनस एफ सी माइनस एफ एम. इफ यू सॉल्व दिस इट बिकम्स ट्वाइस एफ एम. नाउ व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल? इट इज ट्वाइस एफ एम. क्या है? Twice FM. Now I can ask a question that if I increase the frequency of carrier signal, okay, if I want to increase the bandwidth of amplitude modulated signal, okay, for that can I increase the frequency of carrier signal to increase the bandwidth of amplitude modulated signal? Yes, anyone? Have you got this question? No, ma'am. No. यू कांट, है ना, क्योंकि बैंडविड्थ डिपेंड्स ऑन मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, नॉट ऑन कैरियर फ्रीक्वेंसी. ओके, रिमेंबर दिस. ठीक है, बैंडविड्थ डिपेंड्स ऑन द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी. इट डजंट डिपेंड ऑन द कैरियर फ्रीक्वेंसी. अगर हमने कैरियर फ्रीक्वेंसी को कितना भी बढ़ा दिया, even though we can't increase the bandwidth of amplitude modulated signal. If we want to increase the bandwidth of amplitude modulated signal, in that case we have to increase the frequency of modulating signal. Now bandwidth of amplitude modulated signal is twice of the modulating frequency. We had seen equation for amplitude modulated wave. Okay, and the equation is Vc into 1 plus m sin omega mt into sin omega ct. Okay, now as you know that sin x into sin y, ये फॉर्मूला पता है ना आपको? What is sin x into sin y? It is cos x minus y minus cos x plus y upon 2. तो यहाँ पे मैंने 1/2 बाहर निकाला. ठीक है, तो therefore if we apply this formula to this, then we'll get, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? Vc sin ओमेगा ct प्लस MVc sin ओमेगा mt इंटू साइन ओमेगा ct. ठीक है ना, ये हो जाएगा. हाँ, ओके, एंड यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट? तो फर्स्ट टर्म इज Vc sin ओमेगा ct प्लस MVc sin omega mt into sin omega ct. This we can solve by using this formula. So it becomes MVc by 2 cos omega c minus omega m into t minus MVc by 2 cos omega c plus omega m into t. Okay, so therefore here we got three terms. The first term is Vc sin omega ct. Now here you can observe that the first term contains only the carrier signal, right? It's a unmodulated carrier. We can call it as a unmodulated carrier. Vc is the amplitude and omega c is the frequency of carrier signal. Therefore, first term is your unmodulated carrier. Okay, now MVc by 2, it is constant. Okay, into cos omega c minus omega m into t. Now it is omega c minus omega m means carrier signal or carrier frequency minus modulating frequency. Okay, this we can call as a lower sideband. हम इसको बोलेंगे lower sideband. ठीक है, and the third term is MVc by 2 is constant into cos omega c plus omega m into t. Now this term omega c plus omega m है, यानी दिस इज योर अपर साइड बैंड. दिस इज योर अपर साइड बैंड. ठीक है, तो हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन में हमें कितने टर्म्स मिले हैं?
in this equation we got three terms, and which are those terms? First term is unmodulated carrier, and second term is lower sideband, and the remaining third term is upper sideband. Okay, from these equation we can plot spectrum of amplitude modulated signal. How could we plot a spectrum of amplitude modulated signal? Now this is the frequency spectrum of AM wave. ठीक है, तो मिडल इज द कैरियर फ्रीक्वेंसी, दैट इज FC और ओमेगा सी. ओके, और अपर साइड बैंड आपका यहाँ रहेगा. क्यों इस साइड रहेगा, राइट हैंड साइड? क्योंकि राइट हैंड साइड में FC प्लस FM करेंगे तो दिस इज योर अपर साइड बैंड. FC प्लस FM इज योर अपर साइड बैंड. And if we subtract FM from FC, then at left hand side you will get a lower side band. Okay, now come to the amplitude of carrier signal and side bands. ठीक है, तो what is the amplitude of carrier signal from this equation? From this equation you come to know that Vc is the amplitude of unmodulated carrier. Therefore the amplitude of this unmodulated carrier is Vc. Okay, and here for lower sideband and upper sideband the amplitude is MVc by 2. What is the amplitude? MVc by 2. If we consider modulation index, M is modulation index and it is half of Vc by 2. Okay, now if we consider modulation index equals to 1, then it is directly half of Vc by 2. ठीक है, तो ये जो Vc एम्पलीट्यूड है कैरियर सिग्नल का, इसका हाफ एम्पलीट्यूड रहेगा अपर साइड बैंड का और हाफ रहेगा लोअर साइड बैंड का. राइट, it is MVc by 2, and if we consider M equals to 1, then it becomes Vc by 2, means half of this amplitude. Okay girls, are you getting this concept? समझ में आ रहा है बेटा? Yes ma'am. Okay, now bandwidth requirement, BAM, bandwidth requirement is higher upper frequency minus lower frequency. What is the formula of bandwidth? Upper frequency minus lower frequency और higher frequency minus lower frequency. Okay, तो हमारी upper frequency क्या है? Omega C plus omega M. Okay, now here don't get confused. Here we can take omega term or F term. ओके, डोंट कंफ्यूज हियर. हम ओमेगा भी ले सकते हैं, एफ के टर्म्स में भी ले सकते हैं. नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू. अब अगर आपने यहाँ पे ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, तो एफ सी प्लस एफ एम माइनस एफ सी माइनस एफ एम. इफ यू सॉल्व दिस इट बिकम्स ट्वाइस एफ एम. नाउ व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल? इट इज ट्वाइस एफ एम. क्या है? Twice FM. Now I can ask a question that if I increase the frequency of carrier signal, okay, if I want to increase the bandwidth of amplitude modulated signal, okay, for that can I increase the frequency of carrier signal to increase the bandwidth of amplitude modulated signal? Yes, anyone? Have you got this question? No ma'am. No, you can't, है ना, क्योंकि bandwidth depends on modulating frequency, not on carrier frequency. Okay, remember this. ठीक है, bandwidth depends on the modulating frequency. It doesn't depend on the carrier frequency. अगर हमने carrier frequency को कितना भी बढ़ा दिया, even though we can't increase the bandwidth of amplitude modulated signal. If we want to increase the bandwidth of amplitude modulated signal, in that case we have to increase the frequency of modulating signal. Now bandwidth of amplitude modulated signal is twice of the modulating frequency signal, right? ठीक है, now bandwidth required for amplitude modulation is twice the frequency of
Ma'am, you are not audible, ma'am. Hello, girls. Yes, ma'am. Yes, Sorry, I lost the connection. Okay, Yeah, okay, ma'am. connection. Okay. Do you have any doubt in this topic? Shall I repeat it again? ma'am, please share the screen. Oh, okay. Okay. Yes. Yes. Okay. Is it visible? Yes, ma'am. तो इसमें किसी को कोई डाउट है? रिपीट करूं फिर से? हाँ, रिपीट करना है कि shall I move forward? No doubt, ma'am. नो डाउट. ओके. बाकी लोगों को कोई डाउट है? ठीक है. तो हमने देखो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया था? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिटन carrier signal, that is Vc sin omega Ct. Then we have written the modulating signal, that is Vm sin omega Mt. Okay, then we have seen the modulation index, that is Vm by Vc, right? And then we have drawn for this particular derivation, here we have drawn this wave, and from that we can say that the amplitude of amplitude modulated signal is Vc plus Vm. Now we know that Vm is Vm sin omega mt. So it becomes Vc plus Vm sin omega mt. Right. Now here I have taken Vc common. So it becomes Vc into 1 plus m sin omega mt. Okay. Now here I have written VAM. It is for amplitude modulated signal. It is A sin theta. Theta is nothing but omega Ct. Okay, now what is A? A is Vc into 1 plus m sin omega mt. Here I have substituted the value of A in this equation. Okay, now we can simplify this equation. This is the simplified equation. Now we know sin x into sin y. Here we have applied this formula here and we got the three terms. And the first term is unmodulated carrier, second term is lower sideband, third term is upper sideband. And from this, here we have drawn a frequency spectrum of AM wave. Okay, and here we come to know that bandwidth of amplitude modulated signal is twice the frequency of modulating signal. Means bandwidth of amplitude modulated signal depends on the frequency of modulating signal. It doesn't depend on the frequency of carrier signal. Right? Okay. Now time domain representation of AM wave. Before that, we had seen the frequency domain. Now we will see the time domain representation of AM wave. Now here, the similar waveform we have seen yesterday, है ना? जो मैंने बुक में से फोटोकॉपी निकाला था वो आपने देखा था. तो सेम वेवफॉर्म है यहाँ पे. ओके, दिस इज positive envelope and this is negative envelope, right?
Now see, it is VC. This amplitude is VC. Okay, and this much amplitude is VM. This much amplitude is VM, and again this much amplitude is VM. If we add these two, it becomes V max, and this is V mean. And this ये वेव फॉर्म, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे VC प्लस VM साइन ओमेगा MT, यानी ये A है. As you know that the value of A is VC sin omega MT. Sorry, VC plus VM sin omega MT. VC plus VM sin omega MT. ये A है ना. Now this is A. ठीक है. Now this is negative side of envelope. Therefore it is minus of VC plus VM sin omega MT. इसमें किसी को कोई डाउट है ये एनवलप में? क्लियर है? बस स्नेहा ही रिस्पॉन्ड करती है, बाकी लोग कुछ नहीं बोलते हैं. Why? क्लियर है. मैं सिर्फ स्नेहा को नहीं पढ़ा रही हूँ ना, सबको पढ़ा रही हूँ. You should also respond. ठीक है. अब हमें पता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है. मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज VM by VC. Therefore VM is M into VC. क्लियर ये इक्वेशन? ओके, राइट. नाउ व्हाट इज VM? VM is Vmax minus Vmin upon 2. VM is Vmax minus this Vmin upon 2. Okay. Now VC is equals to Vmax minus VM. Now this VC is equals to this Vmax minus VM. And we know that VM is equals to Vmax minus Vmin upon 2. Therefore here I have substituted Vmax minus Vmin upon 2. If we solve this, we'll get Vmax plus Vmin upon 2. This VC is Vmax plus Vmin upon 2, and M is equals to VM by VC. Now VM is Vmax minus Vmin by 2 and VC is Vmax plus Vmin by 2. Okay. So the final equation for modulation index is Vmax minus Vmin upon Vmax plus Vmin. Okay. Now what happened in communication electronics subject when you perform the practical of this modulation index, then in that case you observe this type of pattern or modulation index, this envelope on the CRO, then you have to calculate the amplitude Vmax and Vmin, maximum amplitude and minimum amplitude. Okay, and by using that formula you will have to measure, you will have to calculate this modulation index. तो इस पे एक प्रैक्टिकल रहता है इन 5th सेमिस्टर. तो आपको यहाँ तक क्लियर है? Now equation 10 is the standard method of evaluating the modulation index when waveform is known. अगर हमें waveform पता है, if we know the envelope, envelope यानी ये वाला, if we know the envelope or waveform, then in that case we can use this formula for the calculation of modulation index. Otherwise, if you know VM and VC, then you can use the formula M is equals to VM by VC. Now when only RMS values of carrier and modulated voltage or current are known, then from the power relation modulation index can be, we had seen equation for amplitude modulated wave. Okay, and the equation is VC into 1 plus M sin omega MT into sin omega CT. Okay. Now as you know that sin X into sin Y, ये formula पता है ना आपको? What is sin X into sin Y? It is cos X minus Y minus cos X plus Y upon 2. तो यहाँ पे मैंने 1/2 बाहर निकाला, ठीक है. तो therefore if we apply this formula to this, then we'll get, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
VC sin omega CT plus MVC sin omega MT into sin omega CT. ठीक है ना, ये हो जाएगा. हाँ, okay, and you can solve this equation by using this formula. You can solve this equation using this formula, right? So first term is VC sin omega CT plus MVC sin omega MT into sin omega CT. This we can solve by using this formula. So it becomes MVC by 2 cos omega C minus omega M into T minus MVC by 2 cos omega C plus omega M into T. Okay, so therefore here we got three terms. The first term is VC sin omega CT. Now here you can observe that the first term contains only the carrier signal, right? It's a unmodulated carrier. We can call it as a unmodulated carrier. VC is the amplitude and omega C is the frequency of carrier signal. Therefore, first term is your unmodulated carrier. Okay. Now MVC by 2, it is constant. Okay, into cos omega C minus omega M into T. Now it is omega C minus omega M means carrier signal or carrier frequency minus modulating frequency. Okay, this we can call as a lower sideband. हम इसको बोलेंगे lower sideband. ठीक है. And the third term is MVC by 2 is constant into cos omega C plus omega M into T. Now this term omega C plus omega M है, यानी this is your upper sideband. This is your upper sideband. ठीक है. तो हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन में हमें कितने टर्म्स मिले हैं? In this equation we got three terms, and which are those terms? First term is unmodulated carrier and second term is lower sideband and the remaining third term is upper sideband. Okay, from these equation we can plot spectrum of amplitude modulated signal. How could we plot a spectrum of amplitude modulated signal? Now this is the frequency spectrum of AM wave. ठीक है, तो middle is the carrier frequency, that is FC और omega C. ओके, और अपर साइड बैंड आपका यहाँ रहेगा. क्यों इस साइड रहेगा, राइट हैंड साइड? क्योंकि राइट हैंड साइड में FC प्लस FM करेंगे तो दिस इज योर अपर साइड बैंड. FC प्लस FM इज योर अपर साइड बैंड. एंड इफ वी सब्सट्रैक्ट FM from FC, then at left hand side you will get a lower side band. Okay, now come to the amplitude of carrier signal and side bands. ठीक है, तो what is the amplitude of carrier signal from this equation? From this equation you come to know that VC is the amplitude of unmodulated carrier. Therefore the amplitude of this unmodulated carrier is VC. Okay, and here for lower sideband and upper sideband the amplitude is MVC by 2. What is the amplitude? MVC by 2. If we consider modulation index, M is modulation index and it is half of VC by 2. Okay, now if we consider modulation index equals to 1, then it is directly half of VC by 2. ठीक है, तो ये जो VC एम्पलीट्यूड है कैरियर सिग्नल का, इसका हाफ एम्पलीट्यूड रहेगा अपर साइड बैंड का और हाफ रहेगा लोअर साइड बैंड का, राइट? It is MVC by 2 and if we consider M equals to 1 then it becomes VC by 2, means half of this amplitude. Okay girls, are you getting this concept? समझ में आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. Okay. Yes, now bandwidth requirement, BAM. Bandwidth requirement is higher upper frequency minus lower frequency. What is the formula of bandwidth? Upper frequency minus lower frequency और higher frequency minus lower frequency. Okay, तो हमारी upper frequency क्या है? Omega C plus omega M. Okay, now here don't get confused. Here we can take omega term or F term.
ओके, डोंट कंफ्यूज हियर. हम ओमेगा भी ले सकते हैं, एफ के टर्म्स में भी ले सकते हैं. नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू. अब अगर आपने यहाँ पे ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, तो एफ सी प्लस एफ एम माइनस एफ सी माइनस एफ एम. If we solve this, it becomes twice FM. Now, what is the bandwidth of amplitude modulated signal? It is twice FM. क्या है? Twice FM. Now, I can ask a question that if I increase the frequency of carrier signal, okay? If I want to increase the bandwidth of amplitude modulated signal, okay, for that, can I increase the frequency of carrier signal to increase the bandwidth of amplitude modulated signal? Yes, anyone? Have you got this No, question? ma'am. No, you can't, है ना? क्योंकि bandwidth depends on modulating frequency, not on carrier frequency. Okay, remember this. ठीक है, bandwidth depends on the modulating frequency. It doesn't depend on the carrier frequency. अगर हमने carrier frequency को कितना भी बढ़ा दिया, even though we can't increase the bandwidth of amplitude modulated signal. If we want to increase the bandwidth of amplitude modulated signal, in that case we have to increase the frequency of modulating signal. Now bandwidth of amplitude modulated signal is twice of the modulating frequency signal, right? ठीक है. Now bandwidth required for amplitude modulation is twice the frequency of Ma'am, you are not audible, ma'am. hello girls. Yes, ma'am. Sorry, I lost the connection. Okay, Yeah, okay, ma'am. connection. हाँ, okay. Do you have any doubt in this topic? Shall I repeat it again? Ma'am, please share the screen. Oh, okay, okay. Yes, yes. Okay, is it visible? Yes, ma'am. तो इसमें किसी को कोई डाउट है? रिपीट करो फिर से. हाँ, रिपीट करना है कि shall I move forward? No doubt, ma'am. नो डाउट. ओके, बाकी लोगों को कोई डाउट है? ठीक है, तो हमने देखो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिटन carrier signal, that is Vc sin omega ct
Then we have written the modulating signal, that is Vm sin omega mt. Okay, then we have seen the modulation index, that is Vm by Vc, right? And then we have drawn for this particular derivation, here we have drawn this wave, and from that we can say that the amplitude of amplitude modulated signal is Vc plus Vm. Now we know that Vm is Vm sin omega mt, so it becomes Vc plus Vm sin omega mt, right? Now here I have taken Vc common, so it becomes Vc into 1 plus m sin omega mt. Okay, now here I have written VAM. It is for amplitude modulated signal. It is A sin omega, A sin theta. Theta is nothing but omega Ct. Okay, now what is A? A is Vc into 1 plus m sin omega mt. Here I have substituted the value of A in this equation. Okay, now we can simplify this equation. This is the simplified equation. Now we know sin x into sin y. Here we have applied this formula here, and we got the three terms. And the first term is unmodulated carrier, second term is lower sideband, third term is upper sideband. And from this, here we have drawn a frequency spectrum of AM wave. Okay, and here we come to know that bandwidth of amplitude modulated signal is twice the frequency of modulating signal. Means bandwidth of amplitude modulated signal depends on the frequency of modulating signal. It doesn't depend on the frequency of carrier signal, right? Okay. Now time domain representation of AM wave. Before that we had seen the frequency domain. Now we will see the time domain representation of AM wave. Now here the similar waveform we have seen yesterday, है ना, जो मैंने बुक में से फोटोकॉपी निकाला था वो आपने देखा था, तो सेम वेवफॉर्म है यहाँ पे. ओके, दिस इज पॉजिटिव एनवेलप and this is negative envelope, right? Now see, it is Vc. This amplitude is Vc. Okay, and this much amplitude is Vm. This much amplitude is Vm, and again this much amplitude is Vm. If we add these two, it becomes Vmax, and this is Vmin. And this ये वेवफॉर्म, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Vc प्लस Vm sin ओमेगा mt, यानी ये A है. As you know that the value of A is Vc sin omega mt. Sorry, Vc plus Vm sin omega mt. Vc plus Vm sin omega mt. ये A है ना. Now this is A. ठीक है. Now this is negative side of envelope. Therefore it is minus of Vc plus Vm sin omega mt. इसमें किसी को कोई डाउट है ये एनवेलप में? क्लियर है? बस स्नेहा ही रिस्पॉन्ड करती है, बाकी लोग कुछ नहीं बोलते हैं. Why? क्लियर है. मैं सिर्फ स्नेहा को नहीं पढ़ा रही हूँ ना, सबको पढ़ा रही हूँ. यू शुड ऑल्सो रिस्पॉन्ड. ठीक है. अब हमें पता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है. मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज Vm by Vc. Therefore Vm is m into Vc. क्लियर ये इक्वेशन? ओके, राइट. नाउ व्हाट इज Vm? Vm is Vmax minus Vmin upon 2. Vm is Vmax minus this Vmin upon 2. Okay. Now Vc is equals to Vmax minus Vm. Now this Vc is equals to this Vmax minus Vm. And we know that Vm is equals to Vmax minus Vmin upon 2. Therefore here I have substituted Vmax minus Vmin upon 2. If we solve this, we'll get Vmax plus Vmin upon 2.
This Vc is Vmax plus Vmin upon 2 and M is equals to Vm by Vc. Now Vm is Vmax minus Vmin by 2 and Vc is Vmax plus Vmin by 2. Okay. So the final equation for modulation index is Vmax minus Vmin upon Vmax plus Vmin. Okay. Now what happened in communication electronics subject when you perform the practical of this modulation index, then in that case you observe this type of pattern or modulation index, this envelope on the CRO, then you have to calculate the amplitude Vmax and Vmin, maximum amplitude and minimum amplitude. Okay, and by using that formula, you will have to measure, you will have to calculate this modulation index. तो इस पे एक प्रैक्टिकल रहता है इन 5th सेमिस्टर. तो आपको यहाँ तक क्लियर है? Now equation 10 is the standard method of evaluating the modulation index when waveform is known. अगर हमें waveform पता है, if we know the envelope यानी ये वाला, if we know the envelope or waveform, then in that case we can use this formula for the calculation of modulation index. Otherwise, if you know Vm and Vc, then you can use the formula M is equals to Vm by Vc. Now when only RMS values of carrier and modulated voltage or current are known, then from the power relation modulation index can be calculated. अगर हमें RMS value पता है, ठीक है, carrier और modulated signal के, then from power equation you can find out the value of modulation index. I think see in your signals and systems syllabus you don't have this power relation. Okay, these notes are of communication electronics subject which is in 5th semester. ठीक है, तो उसी में का पोर्शन आपको अभी ये यूनिट नंबर 4 में है. तो फॉर दैट हियर आई एम यूजिंग दीज नोट्स. ठीक है, तो जो पोर्शन है मैं आपको बता रही हूँ कि ये वाला है आपको सिलेबस में. दिस पोर्शन यू आर हैविंग इन योर सिलेबस. ओके, पावर रिलेशन नहीं है आपको, तो ये मैं अभी नहीं पढ़ा रही हूँ आपको. करंट रिलेशन भी नहीं है आपको. ठीक है, यू डोंट हैव दिस. देन यू हैव दिस टॉपिक. डबल साइड बैंड है, DSB-SC है, SSB-SC है. So for DSB-SC you should know this double sideband suppressed carrier. ठीक है, DSB और SSB आपको सिलेबस में है. ठीक है, okay, double sideband suppressed carrier. What does it mean? Double sideband suppressed carrier. ये नाम से क्या समझ में आता है आपको? Is anyone? Are you listening, girls? Yes, ma'am. Double sideband suppressed carrier technique. It means that we are transmitting amplitude modulated signal with two sidebands and suppressing the carrier. It means we are suppressing the carrier and we are sending only two sidebands. What is the need of this? To save the power. पावर ट्रांसमिशन को
सेव करने के लिए वी आर डूइंग दिस, राइट? सी, for amplitude modulated signal, the equation of power is Pc into 1 plus m square by 2. Okay. Now if we suppress the carrier, अगर हमने carrier को suppress किया, then it becomes Pc is 2 by 3rd PAM. यहाँ पे एक derivation है कि अगर हम carrier को suppress करते हैं तो how the power will get reduced. Power relation in DSBSC. See, now the power for DSBSC is PC into m square by 2. Previously it was PC into एक मिनट, हाँ, PC into 1 plus m square by 2 means, and now it is for DSBSC power is PC into m square by 2. So ultimately what is going to happen? The power is going to be reduced for DSBSC and for SSBSC. SSBSC यानी सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर मींस SSBSC में हम क्या कर रहे हैं कि हम एक ही साइड बैंड को भेज रहे हैं। आपको साइड बैंड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? देखो ये साइड बैंड, देखो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, इसमें क्या हो रहा है? AM वेव अगर हम भेज रहे हैं with 2 side bands. Now in that case, this is upper side band and this is lower side band. In that case, we are sending lower side band and upper side band, both the side bands we are sending along with the carrier signal. Along with the carrier signal. Okay. Now, what happened in DSBSC? In DSBSC, we are sending 2 side bands. 2 side band means FC plus FM and FC minus FM. And we are suppressing the carrier signal. We are suppressing the carrier signal. And in SSB, single side band, what happened? In single side band, we are sending only one of the side band. We can either send upper side band or lower side band. Now, what is the need of that? Because we come to know that the information contains in amplitude. It doesn't contains in frequency. In amplitude modulated signal, the information contains in this amplitude. ठीक है? Information amplitude में रहता है, carrier में नहीं रहता है, sorry, frequency में नहीं रहता है, ठीक है? और second चीज, दोनों साइड बैंड जो है वो सेम इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं. Upper side band as well as lower side band carries the same information. No, there is no meaning of sending same information twice. एक ही इंफॉर्मेशन मैं 2 बार भेजूंगी, उससे क्या होगा? मेरा बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, मेरा बैंडविड्थ बढ़ेगा. Instead of that, I can suppress one side band and I can send only one side band, remaining side band, so that the bandwidth will get decreased. Are you getting this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? समझ में आ रहा है क्या? I will explain you in detail. Just मैं ओवरव्यू आपको बता रही हूँ कि DSBSC क्या है, SSBSC क्या है, and what is the need of that. ओके, तो एक एक हमने क्या किया है, हम पहले DSBSC किया हमने, यानी हमने कैरियर का फ्रीक्वेंसी जो है वो सप्रेस करके देखा. फिर हमें ये पता चला कि दोनों साइड बैंड में एक ही इंफॉर्मेशन है, सेम इंफॉर्मेशन वी आर सेंडिंग टॉइस, देन देयर इज नो मीनिंग ऑफ सेंडिंग सेम इंफॉर्मेशन, है ना? तो फिर हमने उसके बाद क्या किया, एक साइड बैंड को और कैरियर को तो हमने सप्रेस किया ही था. अलॉन्ग विद दैट वी सप्रेस्ड one of the side band and we only send the remaining side band to reduce the bandwidth, okay, or to reduce the power.
पावर और बैंडविड्थ का क्या रिलेशनशिप है? अगर बैंडविड्थ ज्यादा है तो पावर ज्यादा लगेगा, अगर मेरी बैंडविड्थ ज्यादा है तो मुझे उतनी बैंडविड्थ सेंड करने के लिए पावर ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। आप अपने घर में इंटरनेट का कनेक्शन लेते हो, वाईफाई का कनेक्शन लेते हो, तो आप क्या पूछते हो उसको कि बैंडविड्थ क्या है भैया, ठीक है। तो फिर अगर आपको ज्यादा बैंडविड्थ का चाहिए है कनेक्शन, है ना, तो वो बोलेगा कि ज्यादा पैसे लगेंगे। ज्यादा पैसे क्यों लगेंगे? क्योंकि फॉर हायर बैंडविड्थ पावर रिक्वायरमेंट इज मोर, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू पे मोर मनी। तो फॉर दैट रीजन ओनली we look forward that the bandwidth should get minimized or the power should get minimized, right? We had seen equation for amplitude modulated wave. Okay, and the equation is Vc into 1 plus m sin omega mt into sin omega ct. Okay, now as you know that sin x into sin y, ये फॉर्मूला पता है ना आपको? What is sin x into sin y? It is cos x minus y minus cos x plus y upon 2. तो यहाँ पे मैंने 1/2 बाहर निकाला, ठीक है। तो therefore if we apply this formula to this, then we'll get, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? Vc sin omega ct प्लस mvc sin omega mt into sin omega ct, ठीक है ना, ये हो जाएगा। हाँ, okay, and you can solve this equation by using this formula. You can solve this equation using this formula, right? So first term is Vc sin omega ct plus mvc sin omega mt into sin omega ct. This we can solve by using this formula. So it becomes mvc by 2 cos omega c minus omega m into t minus mvc by 2 cos omega c plus omega m into t. Okay, so therefore here we got three terms. The first term is Vc sin omega ct. Now here you can observe that the first term contains only the carrier signal, right? It's a unmodulated carrier. We can call it as a unmodulated carrier. Vc is the amplitude and omega c is the frequency of carrier signal. Therefore, first term is your unmodulated carrier. Okay, now mvc by 2, it is constant, okay, into cos omega c minus omega m into t. Now it is omega c minus omega m means carrier signal or carrier frequency minus modulating frequency. Okay, this we can call as a lower sideband. हम इसको बोलेंगे लोअर साइड बैंड, ठीक है। एंड द थर्ड टर्म इज mvc by 2 is constant into cos omega c plus omega m into t. Now this term omega c plus omega m है, यानी this is your upper side band. This is your upper side band, ठीक है। तो हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो इक्वेशन है, वो इक्वेशन में हमें कितने टर्म्स मिले हैं? In this equation we got three terms, and which are those terms? First term is unmodulated carrier and second term is lower side band and the remaining third term is upper side band. Okay, from these equation we can plot spectrum of amplitude modulated signal. How could we plot a spectrum of amplitude modulated signal? Now this is the frequency spectrum of AM wave, ठीक है। तो middle is the carrier frequency, that is FC और ओमेगा सी, ओके। और अपर साइड बैंड आपका यहाँ रहेगा। क्यों इस साइड रहेगा, राइट हैंड साइड? क्योंकि राइट हैंड साइड में FC प्लस FM करेंगे तो दिस इज योर अपर साइड बैंड. FC plus FM is your upper side band. And if we subtract FM from FC, then at left hand side, you will get a lower side band. Okay. Now come to the amplitude of carrier signal and side bands. Okay. So what is the amplitude of carrier signal from this equation? From this equation, you come to know that Vc is the amplitude of unmodulated carrier. Therefore, the amplitude of this unmodulated carrier is Vc. Okay. And here,
For lower sideband and upper sideband, the amplitude is MVC by 2. What is the amplitude? MVC by 2. If we consider modulation index, M is modulation index and it is half of VC by 2. Okay. Now, if we consider modulation index equals to 1, then it is directly half of VC by 2. ठीक है. तो ये जो VC एम्पलीट्यूड है कैरियर सिग्नल का, इसका हाफ एम्पलीट्यूड रहेगा अपर साइड बैंड का और हाफ रहेगा लोअर साइड बैंड का, राइट? It is MVC by 2, and if we consider M equals to 1, then it becomes VC by 2, means half of this amplitude. Okay, girls, are you getting this concept? समझ में आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. Okay. Now bandwidth requirement, BAM. Bandwidth requirement is higher upper frequency minus lower frequency. What is the formula of bandwidth? Upper frequency minus lower frequency और higher frequency minus lower frequency. Okay, तो हमारी upper frequency क्या है? Omega C plus omega M. Okay, now here don't get confused. Here we can take omega term or F term. ओके, डोंट कंफ्यूज हियर. हम ओमेगा भी ले सकते हैं, एफ के टर्म्स में भी ले सकते हैं. नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू. अब अगर आपने यहाँ पे ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, तो एफ सी प्लस एफ एम माइनस एफ सी माइनस एफ एम. इफ यू सॉल्व दिस इट बिकम्स ट्वाइस एफ एम. नाउ व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल? इट इज ट्वाइस एफ एम. क्या है? Twice FM. Now I can ask a question that if I increase the frequency of carrier signal, okay, if I want to increase the bandwidth of amplitude modulated signal, okay, for that can I increase the frequency of carrier signal to increase the bandwidth of amplitude modulated signal? Yes, anyone? Have you got this question? No, ma'am. No. You can't, है ना? क्योंकि bandwidth depends on modulating frequency, not on carrier frequency. Okay, remember this. ठीक है, bandwidth depends on the modulating frequency. It doesn't depend on the carrier frequency. अगर हमने carrier frequency को कितना भी बढ़ा दिया, even though we can't increase the bandwidth of amplitude modulated signal. If we want to increase the bandwidth of amplitude modulated signal, in that case we have to increase the frequency of modulating signal. Now bandwidth of amplitude modulated signal is twice of the modulating frequency signal, right? ठीक है. Now bandwidth required for amplitude modulation is twice the frequency of Ma'am, you are not audible, ma'am. Hello girls. Yes, ma'am. Sorry, I lost the connection. Okay.
Yeah, okay, ma'am. Connection, हाँ, okay. Do you have any doubt in this topic? Shall I repeat it again? Ma'am, please share the screen. Oh, okay, okay. Wait. Yes, yes. Okay. Is it visible? Yes, ma'am. तो इसमें किसी को कोई डाउट है? रिपीट करो फिर से. हाँ, रिपीट करना है कि shall I move forward? No doubt, ma'am. नो डाउट. ओके. बाकी लोगों को कोई डाउट है? ठीक है. तो हमने देखो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रिटन carrier signal, that is Vc sin omega ct. Then we have written the modulating signal, that is Vm sin omega mt. Okay, then we have seen the modulation index, that is Vm by Vc, right? And then we have drawn for this particular derivation, here we have drawn this wave, and from that we can say that the amplitude of amplitude modulated signal is Vc plus Vm. Now we know that Vm is Vm sin omega mt, so it becomes Vc plus Vm sin omega mt, right? Now here I have taken Vc common, so it becomes Vc into 1 plus m sin omega mt. Okay. Now here I have written VAM. It is for amplitude modulated signal. It is A sin omega, A sin theta. Theta is nothing but omega ct. Okay, now what is A? A is Vc into 1 plus m sin omega mt. Here I have substituted the value of A in this equation. Okay, now we can simplify this equation. This is the simplified equation. Now we know sin x into sin y. Here we have applied this formula here and we got the three terms. And the first term is unmodulated carrier, second term is lower sideband, third term is upper sideband. And from this, here we have drawn a frequency spectrum of AM wave. Okay, and here we come to know that bandwidth of amplitude modulated signal is twice the frequency of modulating signal. Means bandwidth of amplitude modulated signal depends on the frequency of modulating signal. It doesn't depend on the frequency of carrier signal, right? Okay. Now time domain representation of AM wave. Before that we had seen the frequency domain. Now we will see the time domain representation of AM wave. Now here the similar waveform we have seen yesterday, है ना? जो मैंने बुक में से फोटोकॉपी निकाला था वो आपने देखा था. तो सेम वेवफॉर्म है यहाँ पे. ओके, दिस इज पॉजिटिव एनवेलप and this is negative envelope, right? Now see, it is Vc. This amplitude is Vc. Okay, and this much amplitude is Vm. This much amplitude is Vm, and again this much amplitude is Vm. If we add these two, it becomes Vmax, and this is Vmin. And this ये वेवफॉर्म इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Vc plus Vm sin omega mt. यानी ये A है. As you know that the value of A is Vc sin omega mt. Sorry, Vc plus Vm sin omega mt. Vc plus Vm sin omega mt. ये A है ना? Now this is A. ठीक है? Now this is negative side of envelope. Therefore it is minus of Vc plus Vm sin omega mt. इसमें किसी को कोई डाउट है ये एनवेलप में? क्लियर है?
बस स्नेहा ही रिस्पॉन्ड करती है, बाकी लोग कुछ नहीं बोलते हैं. Why? मैम क्लियर है. मैं सिर्फ स्नेहा को नहीं पढ़ा रही हूँ ना, सबको पढ़ा रही हूँ. यू शुड ऑल्सो रिस्पॉन्ड. ठीक है. अब हमें पता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है. मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज वीएम बाय वीसी, देयरफॉर वीएम इज एम इंटू वीसी. क्लियर ये इक्वेशन? ओके, राइट. नाउ व्हाट इज वीएम? Vm is Vmax minus Vmin upon 2. Vm is Vmax minus this Vmin upon 2. Okay. Now Vc is equals to Vmax minus Vm. Now this Vc is equals to this Vmax minus Vm. And we know that Vm is equals to Vmax minus Vmin upon 2. Therefore, here I have substituted Vmax minus Vmin upon 2. If we solve this, we'll get Vmax plus Vmin upon 2. This Vc is Vmax plus Vmin upon 2 and M is equals to Vm by Vc. Now Vm is Vmax minus Vmin by 2 and Vc is Vmax plus Vmin by 2. Okay. So the final equation for modulation index is Vmax minus Vmin upon Vmax plus Vmin. Okay. Now, what happened in communication electronics subject when you perform the practical of this modulation index? Then in that case, you observe this type of pattern or modulation index, this envelope on the CRO. Then you have to calculate the amplitude Vmax and Vmin, maximum amplitude and minimum amplitude. Okay, and by using that formula, you will have to measure, you will have to calculate this modulation index. तो इस पे एक प्रैक्टिकल रहता है इन 5th सेमिस्टर. तो आपको यहाँ तक क्लियर है? Now equation 10 is the standard method of evaluating the modulation index when waveform is known. अगर हमें waveform पता है, if we know the envelope, envelope यानी ये वाला, if we know the envelope or waveform, then in that case we can use this formula for the calculation of modulation index. Otherwise, if you know Vm and Vc, then you can use the formula M is equals to Vm by Vc. Now when only RMS values of carrier and modulated voltage or current are known, then from the power relation modulation index can be calculated. अगर हमें RMS वैल्यू पता है, ठीक है, कैरियर और मॉड्यूलेटेड सिग्नल के, then from power equation you can find out the value of modulation index. I think see in your signals and systems syllabus you don't have this power relation. Okay, these notes are of communication electronics subject which is in 5th semester. ठीक है, तो उसी में का पोर्शन आपको अभी ये यूनिट नंबर 4 में है. तो फॉर दैट हियर आई एम यूजिंग दीज नोट्स. ठीक है, तो जो पोर्शन है मैं आपको बता रही हूँ कि ये वाला है आपको सिलेबस में. दिस पोर्शन यू आर हैविंग इन योर सिलेबस. ओके, पावर रिलेशन नहीं है आपको, तो ये मैं अभी नहीं पढ़ा रही हूँ आपको. करंट रिलेशन भी नहीं है आपको. ठीक है, यू डोंट हैव दिस. देन यू हैव दिस टॉपिक. डबल साइड बैंड है, DSB-SC है, SSB-SC है. तो फॉर DSB-SC you should know this double sideband suppressed carrier. ठीक है, DSB और SSB आपको सिलेबस में है. ठीक है, ओके. डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर, व्हाट डज इट मीन? डबल साइडबैंड सप्रेस कैरियर,
ये नाम से क्या समझ में आता है आपको? इज एनीवन? Are you listening, girls? Yes, ma'am. Double sideband suppressed carrier technique. It means that we are transmitting amplitude modulated signal with two sidebands and suppressing the carrier. It means we are suppressing the carrier and we are sending only two sidebands. What is the need of this? To save the power. पावर ट्रांसमिशन को सेव करने के लिए वी आर डूइंग दिस, राइट? सी, फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल द इक्वेशन ऑफ पावर इज पीसी इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर बाय 2. ओके, नाउ इफ वी सप्रेस द कैरियर, अगर हमने कैरियर को सप्रेस किया, then it becomes PC is 2/3 PAM. यहाँ पे एक डेरिवेशन है कि अगर हम कैरियर को सप्रेस करते हैं तो हाउ द पावर विल गेट रिड्यूस्ड. पावर रिलेशन इन DSBSC. See, now the power for DSBSC is PC into m square by 2. Previously it was PC into एक मिनट, हाँ, PC into 1 plus m square by 2 means, and now it is for DSBSC power is PC into m square by 2. So ultimately what is going to happen? The power is going to be reduced for DSBSC and for SSBSC. SSBSC यानी सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर मींस SSBSC में हम क्या कर रहे हैं कि हम एक ही साइड बैंड को भेज रहे हैं. आपको साइड बैंड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? देखो ये साइड बैंड, देखो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, इसमें क्या हो रहा है? AM वेव अगर हम भेज रहे हैं विथ टू साइड बैंड्स, नाउ इन दैट केस this is upper sideband and this is lower sideband. In that case we are sending lower sideband and upper sideband, both the sidebands we are sending along with the carrier signal, along with the carrier signal. Okay, now what happened in DSBSC? In DSBSC we are sending two sidebands. Two sideband means FC plus FM and FC minus FM, and we are suppressing the carrier signal. We are suppressing the carrier signal. And in SSB, single sideband, what happened? In single sideband, we are sending only one of the sideband. We can either send upper sideband or lower sideband. Now, what is the need of that? Because we come to know that the information contains in amplitude. It doesn't contains in frequency. In amplitude modulated signal, the information contains in this amplitude. ठीक है, इंफॉर्मेशन एम्पलीट्यूड में रहता है, कैरियर में नहीं रहता है, सॉरी फ्रीक्वेंसी में नहीं रहता है. ठीक है, और सेकेंड चीज, दोनों साइड बैंड जो है वो सेम इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं. upper sideband as well as lower sideband carries the same information. No, there is no meaning of sending same information twice. एक ही इंफॉर्मेशन मैं दो बार भेजूंगी, उससे क्या होगा? मेरा बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, मेरा बैंडविड्थ बढ़ेगा. Instead of that, I can suppress one sideband
and I can send only one sideband, remaining sideband, so that the bandwidth will get decreased. Are you getting this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? समझ में आ रहा है क्या? आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल. जस्ट मैं ओवरव्यू आपको बता रही हूँ कि डीएसबीएससी क्या है, एसएसबीएससी क्या है, एंड व्हाट इज द नीड ऑफ दैट. ओके, तो एक एक हमने क्या किया है, हम पहले डीएसबीएससी किया हमने, यानी हमने कैरियर का फ्रीक्वेंसी जो है वो सप्रेस करके देखा. फिर हमें ये पता चला कि दोनों साइड बैंड में एक ही इंफॉर्मेशन है, सेम इंफॉर्मेशन वी आर सेंडिंग टॉइज, देन नो, देर इज नो मीनिंग ऑफ सेंडिंग सेम इंफॉर्मेशन, है ना. तो फिर हमने उसके बाद क्या किया, एक साइड बैंड को और कैरियर को तो हमने सप्रेस किया ही था. along with that we suppressed one of the side band and we only send the remaining side band to reduce the bandwidth. okay, or to reduce the power. पावर और बैंडविड्थ का क्या रिलेशनशिप है? अगर बैंडविड्थ ज्यादा है तो पावर ज्यादा लगेगा. अगर मेरी बैंडविड्थ ज्यादा है तो मुझे उतनी बैंडविड्थ सेंड करने के लिए पावर ज्यादा लगेगा. ठीक है ना. आप अपने घर में इंटरनेट का कनेक्शन लेते हो, वाईफाई का कनेक्शन लेते हो, तो आप क्या पूछते हो उसको कि बैंडविड्थ क्या है भैया. ठीक है, तो फिर अगर आपको ज्यादा बैंडविड्थ का चाहिए है कनेक्शन, है ना, तो वो बोलेगा कि ज्यादा पैसे लगेंगे. ज्यादा पैसे क्यों लगेंगे? क्योंकि फॉर हायर बैंडविड्थ पावर रिक्वायरमेंट इज मोर. ठीक है ना. So that's why we have to pay more money. So for that reason only, we look forward that the bandwidth should get minimized or the power should get minimized. Right? ठीक है. Shall I explain it? आपको ये पढ़ना है क्या? If you want, I can explain it, so that you come to know the power relation in AM and also the power relation in DSBSC and SSBSC. Or otherwise I can continue with DSBSC. हाँ, ठीक है. मैथिली काकड़े has left. Okay. कुछ पूछती हूँ तो एटलीस्ट यू शुड आंसर, है ना. How could I come to know what you want? Girls? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then मुझे यहाँ पे ऐसे साक्षात्कार होगा क्या कि आपके मन में क्या चल रहा है? मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ. How could I come to know आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली, है ना. कुछ अगर मैं पूछती हूँ तो यू शुड आंसर एटलीस्ट, राइट. ठीक है. तो डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, दैट इज DSB-SC टेक्निक, here we will study. Now the AM signal is given by, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका डेरिवेशन किया था, है ना. AM signal is given by VC sin omega CT. This is the first term. Second term is MVC by 2 cos omega C minus omega M into T. And the third term is minus. यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे माइनस साइन है. ओके, प्लस साइन नहीं है, यहाँ पे माइनस साइन है. माइनस MVC by 2 cos omega C plus omega M into T. Okay. Now this is my equation number 1. Now thus AM signal has 3 components, है ना. हम ये इक्वेशन से बोल रहे हैं कि AM signal is having 3 components. Which are those components? This is the first component, this is the second component, and this one is the last, that is third component. First component contains unmodulated carrier, second component contains lower sideband, and third component contains upper sideband. Okay. ठीक है. Now the message to be transmitted present only in LSB and USB. Message किस में है?
लोअर साइड बैंड में है और अपर साइड बैंड में मैसेज है मेरा. देयर इज नो मैसेज इन कैरियर सिग्नल. कैरियर में मैसेज रहता है क्या? नहीं रहता है. कैरियर में मैसेज रहता है क्या? नहीं. कैरियर को हम किस लिए यूज करते हैं? व्हाट इज द यूज ऑफ कैरियर सिग्नल इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड टेक्निक, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक? Yes, anyone? What is the role of carrier? To carry information or message. Yes, very good. The role of carrier signal in amplitude modulation technique is to only carry the message signal or information signal. There is nothing, no other means क्या बोलेंगे हम, दूसरा और कुछ काम नहीं है कैरियर सिग्नल का. ओके, उसका एक ही काम है कि बस मैसेज सिग्नल को कैरी करना है फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, बस. ओके, बाकी उसका कुछ काम नहीं है. वो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है उसमें. कैरियर सिग्नल में, कैरियर सिग्नल डजंट कंटेन एनी इंफॉर्मेशन. मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कंटेन्स इंफॉर्मेशन. मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में इंफॉर्मेशन है. तो ये सेकेंड टर्म में इंफॉर्मेशन है और थर्ड टर्म में इंफॉर्मेशन है, और सेकेंड कंपोनेंट एंड थर्ड कंपोनेंट में इंफॉर्मेशन है. मींस एलएसबी और यूएसबी प्रेजेंट और कंटेन्स इंफॉर्मेशन. राइट? ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कंसीडर पावर रिलेशन गिवन बाय हियर. ये पावर रिलेशन इसके पहले हमने प्रूफ किया है. ओके, ये पावर रिलेशन, तो वही से मैंने ये इक्वेशन लिया है. तो पावर रिलेशन क्या है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का? TAM इज इक्वल्स टू PC इंटू 1 प्लस m² बाय 2. ओके, नाउ पावर रिक्वायर्ड फॉर कैरियर कंपोनेंट इज गिवन बाय. अभी मैं क्या कर रही हूँ? अभी मैं निकाल रही हूँ कि कैरियर सिग्नल का जो पावर कंटेंट है वो क्या है. For that I have to solve this equation. If I solve this, PC is equals to PAM upon 1 plus m² by 2. Now let the modulation index be unity. यहाँ पे मैं कंसीडर कर रही हूँ कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स मेरा 1 है, यूनिटी यानी 1. तो therefore m is equals to 1. Now if I substitute m is equals to 1 here, I will get PC is equals to 2 by 3 PAM. Now from this equation it is clear that 2/3 of total AM power is utilized for the transmission of carrier component which doesn't contain any information. यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो पावर है उसका 2/3 पावर लग रहा है. किसको लग रहा है? कैरियर सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए. कितना पावर लग रहा है? 2/3 पावर ऑफ AM. ठीक है ना? 2/3 पावर हम वेस्ट कर रहे हैं. किसमें वेस्ट कर रहे हैं? जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है. ओके, तो सो दैट टू सेव द पावर we can suppress this carrier signal before the transmission. Okay. A significant saving in power requirement can be achieved by suppressing the carrier before transmission. Okay. Now the instantaneous voltage of DSB-SC may be related to AM as V DSB-SC is equals to VAM minus VC sin omega CT. राइट? जो भी आपका AM वेव है वो AM वेव में से अगर हमने कैरियर सिग्नल को माइनस कर दिया तो हमें क्या मिलेगा? DSB-SC सिग्नल मिलेगा. अभी हमने देखा. आर यू गेटिंग दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ठीक है. Now substituting equation number 1 into equation number 4. Now what is equation number 1? Equation number 1 is this. Now substitute VAM here. VAM ये वाला इक्वेशन है हमारा जिसमें 3 टर्म्स है. वो ये इक्वेशन को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. तो विल गेट
पहला टर्म था हमारा VC साइन ओमेगा CT, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म एंड दिस इज द फोर्थ टर्म. तो VC साइन ओमेगा CT और ये वाला VC साइन ओमेगा CT और ये इक्वेशन का VC साइन ओमेगा CT विल गेट कैंसल. अभी यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखा है बट आपको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वो ये देखो दिस इज V प्लस VC साइन ओमेगा CT, हाँ, एंड दिस इज माइनस साइन ओमेगा CT, तो ये दोनों कैंसल हो जाएंगे. तो मेरा इक्वेशन क्या रहेगा फिर, V DSBSC का mVC/2 cos ओमेगा C माइनस ओमेगा m इंटू टी माइनस mVC/2 cos ओमेगा C प्लस ओमेगा m इंटू टी, राइट. दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द सेकेंड टर्म. देयरफॉर DSBSC contains two terms, lower sideband and upper sideband. ओके, तो हमने यहाँ पे मैथमेटिकली भी प्रूफ किया है. मैथमेटिकली ऑल्सो वी हैव प्रूफ दैट DSBSC signal contains two sidebands, lower sideband and upper sideband. It doesn't contain unmodulated carrier signal. Here we have done this because of the power saving requirement. Okay, now frequency spectrum of DSBSC. अभी देखो क्या डिफरेंस है. Now here you can see ये हमारा सिग्नल है, ठीक है. अब मैं DSBSC में क्या कर रही हूँ, ये VC को सप्रेस कर रही हूँ ना, VC साइन ओमेगा CT को मैं सप्रेस कर रही हूँ. Now if I suppress this, तो मेरा ये एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा. Means my waveform will start from this itself, will start from this 0 itself. Are you getting this? Yes, ma'am. Okay. Now my waveform will be like this. VC चला गया. Now it is VM. ठीक है. और अगर मैं ये एक ही स्पेक्ट्रम मैंने ड्रॉ किया है, तो अगर मैं यहाँ पे सॉरी नॉट स्पेक्ट्रम, एक ही एनवलप मैंने ड्रॉ किया है, अगर मैं सेकेंड एनवलप ड्रॉ करती हूँ तो इट विल बी लाइक दिस. लेट मी शो यू. द स्पेक्ट्रम विल बी लाइक दिस. आई नो टाइम इज ओवर बट आई विल कंप्लीट द टॉपिक एंड देन आई विल स्टॉप. ये दिख रहा है आपको? हाँ मैम. ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट डिस्प्ले जैम प्लीज एनेबल. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया इसके पहले. एनेबल कैसे करें इसको? पता नहीं क्या हुआ. ओके, आई विल शो यू इन पेंट. ठीक है, तो हमारा ये जो ऐसा था ना हमारा, ठीक है, तो ये VC को हमने सप्रेस कर दिया, यानी DSBSC का जो वेव रहेगा एनवलप रहेगा, तो एनवलप ये VC 0 हो जाएगा. मींस द एनवलप विल स्टार्ट फ्रॉम this 0 itself. So if we see the envelope, it will be like this. Okay, if you do the coding of DSBSC in MATLAB, then you will get this type of envelope. Okay, ये बीच में आपको कैरियर रहेगा. ये दिस इज कैरियर, ये मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ वो कैरियर है, और ये जो है ये है हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी इंफॉर्मेशन सिग्नल. दिस इज VM and this is VC.